Hello students, we are back with another part of employability skills, that is information and communication skills, जिसे हम आप लोग बोलते हैं ICT skills. Okay, in this part first of all we are going to discuss the operating system. What is operating system? It's an interface between a computer user एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, दोनों के बीच में जो बीच में बिचौलिए का काम करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स द हार्डवेयर विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइन. Operating system is the first software installed in the computer. A computer is useless without an operating system. Suppose मैंने एक नया कंप्यूटर सिस्टम खरीद के लाई मार्केट से. If none of the software is installed there, it means that is only a plastic का डब्बा, nothing else. Fine. तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद फिर आप उसमें वर्ड इंस्टॉल करवाएं, पेंट इंस्टॉल करवाएं, मीन्स जिस भी सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है दैट विल बी इंस्टॉल्ड आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम. फाइन. नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब जरूरत क्या है हमें? इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड प्रोसेसेस एज वेल एज ऑल ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. मीन्स ओवरऑल जो मैनेजमेंट का काम है, सारे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना, सारे हार्डवेयर्स को मैनेज करना, दैट इज द वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स ऑल्सो अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर्स लैंग्वेज. मीन्स हम सबको पता है दैट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1's लैंग्वेज. तो इट्स ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम जो बीच में दोनों के बिचौलिए का काम कर रहा है. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कन्वर्टिंग आर लैंग्वेज टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर्स लैंग्वेज टू आर लैंग्वेज. ओके. Next is, now in this diagram you can see that it's very clear that hardware and operating system both are helping each other. Both cannot means both have the interface. आपस में दोनों बातचीत कर सकते हैं, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम से और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से. उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स डलते हैं, जैसे MS पेंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, और एनी ऑफ द अदर सॉफ्टवेयर जिस पे भी आप काम करते हैं. फाइन. दोज ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. फाइन. तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है, हार्डवेयर में फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ, आफ्टर दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड, और देन ऑन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द यूजर कैन वर्क. तो यूजर का इंटरफेस सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से होता है. क्लियर. नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेजेस ऑल द डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर एंड कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ द डिवाइस, वेदर योर डिवाइस इज इजी और इट्स फ्री फॉर योर वर्क. जितने भी टास्क चल रहे हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की. इट ऑल्सो चेक्स वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. इट ऑल्सो कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. फाइन. सिर्फ हार्डवेयर का ध्यान नहीं रखता, सॉफ्टवेयर का भी ध्यान रखता है. इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी एंड कीप्स ट्रैक ऑफ विच मेमोरी स्पेस इज इन यूज बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज फ्री. It manages the structure of files and directories on a computer system. It keeps track of the amount of disk space used by a specific file. It allows you to create, copy, move, delete files. Means जितने भी फंक्शन आप उस कंप्यूटर पे कर रहे हैं, हर फंक्शन that is controlled or allowed or disallowed by the operating system. Clear. Now there are many types of operating system. Let's learn them one by one. First of all, there is single user operating system. नाम से ही clear है, means that operating system where single user is there. एक ही जना काम कर सकता है एक टाइम पे. Fine. Is designed for use on one computer by one user at a time. एक बार में एक ही यूजर काम कर पाए, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल MS-DOS. नेक्स्ट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाम से ही क्लियर है. फिर दोबारा
मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर इज देयर, मल्टी यूजर नाम है ना. इट्स डिजाइन्ड फॉर यूज ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर बाय सेवरल यूजर्स साइमल्टेनियसली. अब जैसे वी कैन सी हेयर ओनली वन सीपीयू इज देयर, और उस सीपीयू पे यूजर 1 भी काम कर रहा है, 2 भी काम कर रहा है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, है ना. तो मीन्स एक सिस्टम पे 5 यूजर काम कर रहे हैं. तो दिस इज मल्टी यूजर operating system. Next is CUI operating system. CUI means character user interface. It's an operating system that lets a user issue commands to a computer by typing an instruction. Means each and every command is given through typing. मीन्स अगर हमें फाइल ओपन करने की कमांड याद है तो हम यहाँ खोल पाएंगे फाइल को, अदरवाइज वी कैन नॉट. फॉर एवरी टास्क देयर इज अ कमांड इन CUI. यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इंटरफेस इज देयर. मीन्स हर चीज थ्रू कमांड्स इट विल बी डन. कोई हमें गाइडेंस नहीं, कोई मेन्यू नहीं, कोई क्लिक नहीं, नथिंग, ओनली कमांड्स. ओके, द इंस्ट्रक्शंस आर टाइप्ड आफ्टर अ प्रॉम्प्ट called command prompt. जहां पर भी हम कमांड लिख रहे हैं, like here wherever we have to type command, that is called command prompt. Okay, each command has to be remembered. अगर यूजर को कमांड याद नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता. सिंपल. Okay, example is again MS-DOS. Next type of operating system is GUI operating system. Full form is Graphical User Interface. It lets a user issue commands to a computer by interacting with various graphical components. अब हम Windows की बात करते हैं. Like we can see, suppose मुझे सिस्टम नहीं भी आता चलाना, computer I don't know how to work on, but if somebody says click on start, तो मैं कहीं भी माउस ले जाके ढूंढ के आई कैन सर्च आउट फॉर द स्टार्ट बटन. देयर आर सेवरल बटन्स, ऑप्शंस, हेल्प इज देयर. तो एटलीस्ट वी कैन ट्राई. ऐसा तो नहीं है कि कमांड याद होगी तभी कुछ होगा. तो दिस इज द फीचर ऑफ GUI. एवरीथिंग इज अवेलेबल इन ग्राफिकल फॉर्म. आइकन्स आर देयर, मेन्यूज आर देयर, स्क्रॉल बार इज देयर. ओके, तो एग्जाम्पल ऑफ GUI इज विंडोज. नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाम से क्लियर है, दैट ऑपरेटिंग सिस्टम विच कैन डू मल्टीटास्क एट सिंगल टाइम. फाइन. इट लेट्स द कंप्यूटर हैंडल सेवरल टास्क एट सेम टाइम. एग्जाम्पल अगेन विंडो. मीन्स विंडोज में बहुत सारे फीचर्स हैं. लाइक हेयर इन द फिगर यू कैन सी दैट इन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एट द सेम टाइम वर्ड इज operated, email is operated and web browser is also operated. तो we can see operating system का इतना part word ने लिया हुआ है, इतना mail ने लिया हुआ है, the rest of the part is, you can see the division. तो this is multitasking. Next is batch operating system. Batch. अब ये batch word बहुत important है. कैसे, अभी हम पढ़ते हैं. It doesn't interact with computer directly. Each user prepares his job on an offline device like punch card page, submit it to the computer operator. To speed up processing, jobs with similar needs are batched together and run as group. It has the advantage of low idle time and managing large job works. Example है IBM MVS. Means यहाँ क्या होता है, suppose मेरे पास 5 jobs हैं. ओके, 5 टास्क हैं, काम है सिस्टम के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. 5 टास्क मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को दूंगी. उन 5 में से 3 टास्क एक जैसे हैं और 2 अलग अलग हैं. तो यहाँ पर उन 3 टास्क का एक बैच बन जाएगा. फाइन. तो 3 टास्क का एक बैच, बाकी 2 टास्क के अलग अलग बैच. तो 5 टास्क के टोटल कितने बैच बने? 3 बैच, है ना. तो सिस्टम का टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, टास्क भी सारे कंप्लीट हो गए, और सिस्टम को लो आइडल टाइम मीन्स खाली बैठने का टाइम भी नहीं मिला. ओके, तो इट हैज द एडवांटेज ऑफ लो आइडल टाइम एंड मैनेजिंग लार्ज वर्क्स. बड़े बड़े काम भी इसी के थ्रू होते हैं. ओके, इन द डायग्राम वी कैन सी देयर आर 3 जॉब्स. तो उनके 3 बैच बन गए. क्यों 3 बैच बने? बिकॉज मे बी दीज ऑल जॉब्स आर डिफरेंट.
अगर सेम होती तो तीनों जॉब का एक बैच बन जाता, एंड देन दैट बैच विल गो टू सीपीयू एंड दैट विल बी कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाम से क्लियर है, वेयर टाइम इज शेयर्ड. It's a type of multitasking operating system that divides the CPU time equally among all the programs. कौन से प्रोग्राम? Which are waiting to be executed. ओके जितने प्रोग्राम वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, उन सब में बीच में टाइम बांट देते हैं. भाई इतने टाइम के लिए ये प्रोग्राम रन होगा, इतने टाइम के लिए ये प्रोग्राम रन होगा. तो मीन्स टाइम शेयरिंग इज गोइंग ऑन. ओके, इट एलोकेट्स अ स्लाइस ऑफ सीपीयू टाइम. जो सीपीयू का टाइम होता है ना, दैट इज divided, means in nanoseconds that time is there, and that is given to each of the program to execute in turn by turn the task is carried on. The time that each task gets to execute is called its quantum. Okay, next is real time operating system. Real एक word आया है, ध्यान से समझेंगे. Real time operating system means it seems that we are working really at current situation. कैसे? It is defined as data processing system in which the time interval required to process and respond to input is so small that it is almost immediate. The time taken by the system to respond to an input or output is termed as response time. Means ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है वेयर द टाइम गैप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज ऑलमोस्ट निल. जितना भी वो नैनो सेकेंड्स में टाइम लगता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम. एग्जाम्पल है सपोज टिकट रिजर्वेशन सिस्टम. फाइन, रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम. इन दैट व्हाट हैपन्स, सपोज मैं और मेरा फ्रेंड दो अलग अलग लोकेशंस पे एक ही टाइम पे रिजर्व कर रहे हैं किसी सेम ट्रेन के लिए, और मेरे से एक सेकंड पहले मेरे फ्रेंड ने वो ही सीट ले ली जिसके लिए मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ. तो व्हाट विल हैपन, मैंने अप्लाई किया लेकिन मेरे से एक मिनट पहले या एक सेकंड पहले मेरे फ्रेंड ने अप्लाई कर दिया. तो वुड दैट सीट बी रिजर्व फॉर मी? नो, नॉट एट ऑल. तो दिस इज द रिस्पॉन्ड टाइम. ओके, तो एक सेकेंड के फ्रैक्शन के बीच में, मीन्स दिस इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन्स ऐसा लगता है कि रियली में हम रियल सिचुएशन में काम कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम. इन दिस व्हाट हैपेंड, द लूजली कपल्ड सॉफ्टवेयर allows computer and users of a distributed system to be independent each other but having a limited possibility to cooperate. Means what it is saying here, softwares of different computers are distributed. Okay, they work independently but there are possibility to cooperate with them. Like networking होता है, computer network. Fine, means आपके सिस्टम में डिस्क भी होती है, मेमोरी भी है. हर सिस्टम में मेमोरी है, किसी में मेमोरी है, किसी में डिस्क है, किसी में मेमोरी है, किसी में डिस्क नहीं है. फाइन, तो इफ आई वॉन्ट टू यूज द डिस्क ऑफ एनी अदर सिस्टम फॉर एनी अदर सिस्टम, तो दैट कैन बी डन. इन दिस केस दे आर कॉल्ड distributed system. An example for such a system is a group of computers connecting through local network. Every computer has its own memory, जिसे हम hard disk कहते हैं. A distributed operating system is a software over a collection of independent, networked, communicating and physically separate computational nodes. Okay, they handle jobs which are serviced by मल्टीपल CPUs. फाइन, जब भी हमने किसी नेटवर्क में सिस्टम्स को कनेक्ट किया हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हर सिस्टम में हार्ड ड्राइव हो. अगर एक सिस्टम में नहीं भी है तो दैट हार्ड ड्राइव और CD ड्राइव दैट कैन बी यूज्ड फ्रॉम अदर सिस्टम ऑल्सो. ओके, तो दैट कैन बी डन ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. क्लियर? नेक्स्ट इज network operating system. What is this? It's an operating system that includes special functions for connecting computers and devices in LAN. LAN is local area network. Means एक network बन जाता है
where computers are connected with each other. किस लिए कनेक्ट करते हैं? फॉर शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो. सपोज 6 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एंड वी हैव ओनली 1 प्रिंटर. ओके, तो प्रिंट आउट कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल द 6 सिस्टम्स ओनली फ्रॉम द 1 प्रिंटर. Okay, this is the benefit of network operating system. Means those systems which are connected in the network, they all can share hardware as well as software. Next is mobile operating system. In the mobile operating system, these are specially created for the mobile phones, tablets, smartwatches. Fine. These combine features of personal computer operating system with other features for mobile और handheld use. अब कुछ examples मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के iOS हैं, विंडोज़ फ़ोन में भी आता है, एंड्रॉयड सबसे बड़ा है एंड्रॉयड, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर nowadays. Now popular operating systems are there. First is Windows, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है in today's trend. It's the series of operating system developed by Microsoft. Each version of Windows includes a graphical user interface. हम पहले बता चुके हैं what is GUI. With a desktop that allows user to view files, folders, menus. Okay, from last 2 decades, Windows has been the most widely used operating system. Then comes Mac operating system. It is developed by Apple for their Mac series of computer. MacBooks आती हैं अभी भी. It provides a graphical user interface. यहाँ पर भी GUI available है with icons on the screen and various GUI tasks are there. It is generally considered more robust operating system than Windows. Okay, more secure. Security levels are more than Windows. Then comes Android. सबसे most popular mobile operating system. It's an operating system in Google's Linux based open source operating system for mobile devices. Android has been the world's most widely used smartphone platform as of 2010. It is designed primarily for touchscreen mobile devices, especially for smartphones. Next is iOS. iPhones बोलते हैं, है ना? It's a mobile operating system created and developed by Apple exclusively for its hardware. It's the operating system that presently powers many of the mobile companies, mobile devices, including iPhones or iPod. It also powered the iPad prior to the introduction of iPad operating system in 2019. It's the second most popular mobile operating system. Next comes Linux. It's also a GUI operating system. It has been developed from old Unix operating system. It's the open source. अब open source क्या होते हैं? Those which are freely available, which can be downloaded from the net, which can be distributed. Okay, and lets user modify and redistribute. Means सब कुछ user के हाथ में download कर सकते हैं, बिन कोई permission नहीं चाहिए. We can distribute easily, we can modify it. Okay, तो Linux is one of them. Next is component of GUI. अब graphical user interface बहुत बार वर्ड आया. अब इसके components पढ़ते हैं हम क्या क्या हैं. GUI stands for graphical user interface. बता दिया हमने. इसे जनरली GUI भी कह देते हैं. GUI. Okay, it's a user interface that includes graphical elements. कौन से graphical elements? Icons हैं, buttons हैं, bars हैं. The term was created in 1970s to distinguish graphical interface from text-based ones such as command line interface. Means CUI मुश्किल थे लोगों के लिए सीखना because for every task command is to be learned. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देयर केम GUI. अब इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं. हेयर वी कैन सी अ विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन. आई विल शो यू इट इन द बिगर वर्जन. फर्स्ट इज डेस्कटॉप. क्या होता है डेस्कटॉप? व्हेन यू बूट योर कंप्यूटर सिस्टम, द वेरी फर्स्ट स्क्रीन आफ्टर बूटिंग विच कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. Then on the desktop small pictorial representations are there. कुछ files होती हैं, कुछ folders होते हैं, कुछ programs होते हैं. They all are called icons. Then taskbar.
at the bottom of your desktop a bar is there that is called taskbar. Next is start button. Now in the start button, it is present at the left side of the taskbar, and if we want to open any of the program, we have to just click on the start button, then search out for your specific program. Next is quick launch icons. These icons are on the taskbar for commonly used programs used to start a program without opening the start menu. Means these programs are automatically pinned with your taskbar. I'll show you this. Then open programmed icons means those programs which are already open and their icon are currently available on the taskbar. Then notification area present on the right side of the taskbar. It displays date and time, volume and any printer setting. All these are included there. Next is clock. It's present in the notification area and displays the current date and time. Then show desktop button. It's present at the extreme right of the taskbar, and when you click the button, it minimizes all open windows and shows you the desktop. Then comes Windows. It's the graphical interface element used to display the content of an application for the user to view and interact with. Then comes title bar. It's the top bar at every window with the minimize, maximize and close button. Next is menu bar. It's the list of options that denotes various actions that can be performed on an object. Next is shortcuts. These objects are linked to files, folders and programs that are stored on other location, but with the help of the shortcut we can open them very fastly. Okay, now here you can see this is my desktop. Means after booting, the very first screen which opens is the desktop. Here on the desktop, these small pictures you can see, like this is a file, this is a program, okay, all these, this is a folder, these all are called icons. Okay, this is icon of a folder. Then this bottom bar, this is called taskbar. Okay, and these pinned program, you can see this W is pinned here. This is an icon of MS Word. Fine. So this is the quick launch toolbar. Okay, and these all are the applications which are opened here. Okay, and so we can see all the open programs available at the taskbar. This is your start button. Fine. Then here this is the notification toolbar. You can see the net icon, the volume icon, the battery icon. Fine. Date and time is available here. All these, this is the notification bar. Clear? All these are, and this is your show desktop button. Bilkul extreme right of your taskbar. Got it? This is the desktop which we had just. Next is file system. In the file system, we will discuss the hierarchical pattern of the file saved in your system. Here in your computer, whatever you store, that is stored in the form of a file. Fine. This file system, it's just a way in which you give name to a file and store it, and whenever you require that file, you retrieve it. Clear? यही होता है ना फाइल का काम. There are specific naming conventions for the naming files and folders, like characters that can be used maximum number of characters. Means fixed होता है कि some specific characters can't be used, or means maximum length is there for the like more than 255 characters we can't use in naming a file. So some conventions are there. File can't be separately placed into groups like folders, directories. Means we can separately place your file in various folders, various groups. Like here you can see a pictorial representation of D drive is given. Like here we have assumed that in D drive there are two folders, and in folder number 1 there is another folder and one file, and in that folder again two files are there. Okay,
and in another folder too within the D drive there is again a folder, and in that folder again 2 files are there. So here we can say that hierarchical representation of file storage is given here. Okay, each directory and folder can contain related files. ठीक है, हर फोल्डर में उससे रिलेटेड फाइल सेव होती है. A subfolder may contain one or more file or subfolders. These allows easy accessibility of files, and this is how the files are managed in hierarchical order. This allows you to view the files in the current directory that moves through subdirectories. Now how you can create a folder? For creating a folder, first of all you have to double click the computer icon. Okay, then select the drive in which you want to create a folder. Then Windows will open of the selected drive, and there you will get an icon of new folder. Okay, this is one method. Another method is right click anywhere you want to create the folder. Fine, and from that right click menu, shortcut menu, you will click on new folder option. This is how the new folder can be created. Now let me show you. Here I have opened this new folder option. Suppose I have clicked on my computer, this PC option. Okay, this my PC, let me make it larger. This my computer option is there, and here I am clicking on drive F. Okay, drive E. Clear? Then here in documents I want to create one folder. Then what we can do? Right click. After right clicking, you can see this shortcut menu is open. You can click on new, and after clicking on new you will get this again sub menu, and here it is folder. Click on folder. This option appears. Here you can name your folder like first. I have named this first and press enter. Okay, so this folder is ready. When you click on this folder, you can see right now we are in documents and then first folder. This is how we can create a folder. Clear? Next is creating a file. How we can create a file? To create a new file, first of all right click anywhere in the blank area or the right column. Means we can create any file in any of the drive or on the desktop also. Like here I have shown, when we right click then this menu will open. अभी मैंने दिखाया था आपको. From there click on new. हमने folder बनाने के लिए हमने folder option पे click किया. But now we don't want to create folder, we want to create a file. For that these are the various options, like creating Word file, creating Excel file, creating Paint file. All these options are there. It depends on you which file you want to create. Okay, so from the shortcut menu go to new, then select the type of the file. Clear? Next is renaming folders and files. अब हमने अभी अपने फोल्डर बनाया, इसका नाम हमने दिया फर्स्ट. अब उसको रीनेम करना है. कैसे करेंगे? फॉर रीनेमिंग राइट क्लिक ऑन द फोल्डर and there you will get an option of rename. Okay, same, right click from the shortcut menu, click on rename, type your name and press enter. Like documents में मेरा folder first है. Okay, I want to rename it. Right click, the shortcut menu opens, click on rename. Now I want to rename it second. नाम लिख दिया, press enter. Okay, look, name is changed. This is how we can rename the folder. Now next is deleting files and folders. How to delete? To delete file or a folder, we have to click on the file folder, और keyboard से सिर्फ you have to press del key and the file will be deleted. और second option, right click on your file and select delete option from the shortcut menu. Fine. चलिए दिखाते हैं आपको. Here I have opened. This is my folder which we have created. Right click on it and from this you will get delete. या तो ये, नहीं तो keyboard से press delete is done. It's deleted. Okay.
नाउ नेक्स्ट इज कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. हमें कॉपी करना है, ठीक है. व्हाट इज कॉपी? when you copy any file or folder, duplicate of the original file or folder is created at the new location. means पुरानी लोकेशन पे भी रहेगी एक कॉपी और एक नई कॉपी आप बनाएंगे. दैट इज कॉपिंग. बहुत सारे मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड इज शॉर्टकट मेन्यू. फॉर शॉर्टकट मेन्यू राइट क्लिक ऑन द फाइल जिसको भी कॉपी करना है. फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन. नाउ गो टू द लोकेशन where you want to copy and again right click and paste. This is how we can copy. Next is drag and drop method. How it can be done? To copy a file or folder, just hold down control key while dragging to a new location and drag, that will be copied. और keyboard से use करके select the file, control C for copy and then go to destination, then control V for paste. 3 method अभी हमने सीखे. Now look, I am right clicking, then click on new. After clicking on new option, a shortcut menu opens and from that shortcut menu I am clicking on folder. Look here, new folder is created. I am naming this folder as ABC, then press enter. जैसे ही आप enter press करेंगे the folder is created. Now I want to copy. First मेथड हमने सीखा, राइट क्लिक ऑन द फोल्डर, क्लिक ऑन कॉपी फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. कॉपी हो गया लेकिन अभी पता नहीं चल रहा. राइट नाउ वी आर इन ई ड्राइव. नाउ आई एम मूविंग टू एफ ड्राइव. एफ ड्राइव पे आ गए. इन एफ ड्राइव राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन पेस्ट. ABC आ गया. अभी एफ ड्राइव में है. चेक करते हैं ई ड्राइव में है कि नहीं है. ई ड्राइव में भी. ओके, दिस इज कॉपिंग. ओके, सेकेंड मेथड हमारा होल्ड द कंट्रोल की. मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर रखी है और इसको ड्रैग कर रही हूँ एंड लीव. लुक, दोबारा करते हैं. प्रेस द कंट्रोल की ऑफ द कीबोर्ड, देन क्लिक ऑन फोल्डर एंड डोंट लीव माउस बटन. ड्रैग इट एंड लीव. आप जितनी बार इसको ड्रैग करेंगे कंट्रोल की पकड़े पकड़े इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ सेम फाइल. क्लियर? अब कीबोर्ड से करते हैं. अब कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए सपोज ये फाइल है. क्लिक ऑन दिस फाइल, फ्रॉम कीबोर्ड कंट्रोल C. ओके, कंट्रोल C प्रेस कर दिया मैंने. अब मैं इस फोल्डर के अंदर जाके यहाँ पेस्ट करना चाह रही हूँ. देन फ्रॉम कीबोर्ड कंट्रोल V. लुक, डन. तो तीनों मेथड क्लियर है. दिस इज हाउ वी कैन कॉपी अ फाइल. नाउ टू मूव अ फाइल. फॉर मूविंग अ फाइल मीन्स एक लोकेशन से हटा के दूसरी लोकेशन ले जाना. ठीक है, रिमूविंग फ्रॉम वन लोकेशन एंड टेकिंग दैट टू द another location. When you want to move a file or any folder from original location to some other location, so that is called moving files. For that again 3 methods are there. First is shortcut menu. जैसे कॉपी किया था उसकी जगह यहाँ पर हो जाएगा कट. Right click the file, then choose cut option from the shortcut menu, then go to the destination where you want to paste, where you want to move, and again right click and paste. Clear? Again drag and drop method. To copy a file or folder, select the file and drag it to a new location. Okay, next is using keyboard. Select the file or the keyboard or the folder, sorry, then control X for cut and then go to destination and control V for pasting the file. चलिए प्रैक्टिकल करते हैं इसके तीनों ऑप्शंस का. Look, I want to cut this file. अभी हम ABC कॉपी फोल्डर में है. राइट क्लिक, कट. ठीक है, अभी तो है यहाँ पर. अभी हम F ड्राइव में गए. ओके, इस फोल्डर के अंदर से लाए ना हम. ठीक है, अब हम इस फोल्डर में जाके पेस्ट करना चाहते हैं. राइट क्लिक एंड पेस्ट. लुक, ABC यहाँ आ गया. ठीक है, चेक करते हैं इस फोल्डर में है कि नहीं. नहीं है. लुक, दिस इज मूविंग अ फाइल. अब सपोज इस फाइल को मुझे मूव करना है. कंट्रोल प्रेस किया. नाउ सेकेंड मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप. उठाया और जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ ले जाके डाल दिया. इसके अंदर देखते हैं. लुक, हेयर अनदर कॉपी इज देयर. फाइन. नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम कीबोर्ड. क्लिक ऑन दिस. फ्रॉम कीबोर्ड आई एम प्रेसिंग कंट्रोल प्लस X. इट मीन्स आई हैव कट इट. कट हो गया. इस फाइल के अंदर जाके हम यहाँ पेस्ट करना है. कंट्रोल V कीबोर्ड से प्रेस करें. आई हैव प्रेस्ड एंड लुक, हेयर इट इज
copied. This is how we can cut, copy with the help of these three different methods. Clear? Next is permanently deleting the files. You can permanently delete the contents of recycle bin in any of the following way. इसके भी बहुत सारे मेथड हैं. फर्स्ट मेथड इज राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन, देन क्लिक एम्प्टी रिसाइकल बिन. ओके. सेकेंड मेथड इज डबल क्लिक द रिसाइकल बिन, or in the recycle bin you will get empty recycle bin option. Clear? Now how it will be done? Let me show you the practical. Here look, this is the recycle bin. If I right click on this you will get empty recycle bin. ठीक है. जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी it will become empty. Second method, I am not clicking right now. Double click on your recycle bin icon. This will open. Okay, let me make it larger. Done. Here you will get recycle bin tools. Okay, here again we are getting empty recycle bin. चाहे वो जो शॉर्टकट मेन्यू लिया था उससे, चाहे इससे. Suppose I am clicking, it is asking, are you sure you want to permanently delete these 90 items? Yes. हाँ, मुझे delete करने हैं. Look, all is deleted, or you can see the dustbin, or you can say the recycle bin is empty now. Now next is restore the files or folders from the recycle bin window. Means recycle bin में कोई फाइल गलती से आपने भेज दी. How to get that file back? To recover a file from recycle bin, just right click on that file and then click restore, or select the file or click the restore from the item. Any of the option we can take. Now let's see the practical demonstration. Suppose this file I am deleting. Look here. I am clicked, right click and delete. Okay, it is deleted. You can see recycle bin is there. Double click on recycle bin. This file is here. ये गलती से delete हो गई. Now I want to recover it, get it back. Two options are there. Select it, and from recycle bin here you can see restore the selected item. कि इस फाइल को वापस भेज दो. या second method, right click on the file, restore. जैसे मैं रिस्टोर करूंगी खाली, ओके, इसको क्रॉस करते हैं और बाहर देखते हैं, दैट फाइल इज बैक. दिस इज हाउ वी कैन रिस्टोर द फाइल्स फ्रॉम द recycle bin. The next topic is which is most important for ICT skills, that is importance and need of care and maintenance of computer. Means हमारा जो computer system है, which is the backbone of ICT, how to maintain and how to care for that. For that, first of all, we must know what's it. The computer system requires maintenance so that the system works efficiently, because if we maintain it poorly, so it may leads to our system failure. Regular care and maintenance may help us to detect any issue at an early stage, so that the functioning doesn't be stopped. Since a lot of important data is stored in the computer, it's necessary to have regular maintenance of the computer to be done. Suppose हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लें, अगर हमें फिट एंड फाइन रहना है तो हमें रेगुलर अपना मेंटेनेंस रखना पड़ेगा. सपोज खांसी होती है तो खांसी की दवाई, जुकाम होता है तो जुकाम की दवाई, फाइन. तो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ मेंटेनेंस. तो इसीलिए इफ एनी इशू यू सी in your system at an early stage, so instantly the maintenance or whatever the requirement of the system is there, that should be done. The computer virus like malware and other harmful softwares, they can cause damage to your system. If antivirus is installed in the system and is updated or run periodically, then any loss of data that can be prevented. A large number of files are stored on our computer systems. These files can be disorganized or fragmented and may result in slowing down of the computer. Regular maintenance of the system includes installing updates, security, taking backups or scans. For both internal and external parts of the computer system, that should be taken care of. क्या ध्यान रखना है? Number 1, keep your computer dust free. Means धूल जमने नहीं देनी. Don't eat or drink
while working on your computer because food or drink may spill on the system. तो खाना पानी सब सिस्टम से दूर रह के. To keep the keyboard clean, make sure your hands are clean before using it. अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो obviously keyboard और ज़्यादा गंदा होगा. CDs and DVDs should be handled carefully so that it doesn't get any scratches. Keep keyboard covered whenever not in use. So at least these things must be taken care of. Now cleaning of computer components. कैसे सफाई रखें? Computer components needs proper care. Preventive maintenance increases the life of the component. अगर हम अपनी बॉडी का ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिन ठीक ठाक चलेंगे. Same thing with computer system. If the proper maintenance is done, then definitely the life of the machine is increased. Like any cable is damaged, so that must be replaced. It should be timely replaced or repaired. जैसे मैंने कहा अभी, if fan is there in the CPU, if that fan is not working, then definitely fan का काम क्या होता है? कूलिंग करना. जो CPU में चलते चलते गर्मी हो जाती है, फैन क्या करता है? गर्म हवा को बाहर निकालता है. तो इट मीन्स अगर फैन खराब हो गया लेकिन हमारा सिस्टम फिर भी चलता है, लेकिन जो सिस्टम की मशीन्स हैं जो टेम्परेचर होने चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर CPU के अंदर बन जाता है, तो डेफिनेटली 2-4 दिन में योर CPU विल स्टॉप वर्किंग, है ना. तो हम ये सोचते हैं अरे नहीं मशीन तो चल रही है तो क्या ज़रूरत है. नो, एवरी पार्ट हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंट इन योर कंप्यूटर. Therefore, regular inspection of the components is required. This increases the lifetime of your hardware. Now general precautions to be taken care while cleaning. What are those? Number 1, always power off the computer system before cleaning. Means चलते चलते कोई सफाई नहीं. Clear? Always power off before cleaning. Never spray cleaning fluid directly on the components of the computer. First spray the liquid on the cloth, then with the cloth wipe out the components. Clear? Don't allow the cleaning liquid to drip near the circuit board. Circuit board के आसपास भी liquid नहीं. Preferably use anti-static wristband which helps to prevent building up of static electricity near the electronic device. अब computer monitor का कैसे साफ करना है? To clean the computer monitor you can use a soft lint free cloth. गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए. Like cotton, water or any special cleaning fluid we can clean the monitor. You should not spray water or any cleaning liquid directly on monitor as it may run through the seams. अंदर जा सकता है. First of all वही method, कपड़े पे पहले liquid लगाएं, then gently wipe out your screen with that cloth only. Keyboard को कैसे ध्यान रखेंगे? Dirt and dust can cause damage to the keyboard. Keys of the keyboard may not function properly. If dirt enters the keys, you should always clean the keyboard periodically by holding upside down and shaking it. Means उल्टा करके उसे हिलाएं, तो जो भी डस्ट उसके अंदर गया होगा that will come out. You can also clean it by blasting it with compressed air. Means compressed air आते हैं ना, वो हम प्रेस करते हैं और हवा काफ़ी फोर्स में निकलती है, तो through that it can be done. After this use a damp lint free cloth to clean the top of the keys. ऊपर से तो हम सिंपल क्लॉथ से साफ कर सकते हैं, लेकिन मेथड वही. Don't put liquid directly on the keys. Always put on the cloth, then with the cloth you can clean. You should never spray any liquid cleaner directly. Same thing. Now how to clean mouse? You can clean the mouse from the bottom with a clean lint free cloth. Lens area can be cleaned by blowing air or any cotton swab. If any digital camera is there in my computer, then what to do? Never touch the lens of the camera. To remove the dust you can use soft lens brush or wipe out a soft dry cloth. For stubborn dust you can use special fluid or lens. Cleaning which should be first pot on the tissue and then wipe the lens. Never put the fluid directly on the lens. Again same method, put it on the cloth and then clean with the cloth. अब CDs और DVDs का कैसे ध्यान रखना है? Keep the CD DVD in proper case to prevent it from the scratch free.
If there is some dirt on CD DVD, it may not work at all. Means इनको dust लगते ही खराब हो जाती हैं चीज़ें. Fingerprints and dirts can be removed by lightly rubbing it with a clean lint-free cotton cloth specially. If the dirt is hard to remove, you can use special cleaning fluid for that. Put the drop of fluid on cloth, then with the cloth it should be cleaned. Means किसी भी चीज़ पे directly नहीं आपने लगाना है कुछ भी. Okay? Now preparing maintenance schedule. कैसे? Schedule बनाएं एक proper की system के maintenance का, but how? Regular maintenance of computer system is very important, but how to keep it? Keep the component of computer like keyboard, mouse, monitor or whatever you have, that must be clean. Replacing hardware that is not functioning properly. जो part काम नहीं करता, replace that. Keep food items away from the computer. Cables and cords shouldn't be messed up. Means आपस में उलझी पुलझी तारें नहीं होनी चाहिए. Removing unauthorized softwares from the computer. जो unrequired, unnecessary, illegal, pirated softwares are remove them. Taking regular backup of the data. If any important file is there, so definitely the backup should be taken. Ensure backups are working properly by periodically restoring data. You should use external hard drives for backup of data on your computer. Running antivirus periodically means weekly or maybe monthly the antivirus must be run. Keeping antivirus software up to date. ऐसा नहीं एक बार antivirus install कर दिया तो बस जब तक वो expire नहीं होता it will remain same. No, whenever any update is there तो keep on updating that. Don't overcharge the batteries. Means जितनी आपको requirement, if battery is full then remove the charger. Don't overcharge. Overcharge करने से भी खराब होता है. Don't block the vents. Always shut down the computer properly. Regular scan should be done to check the virus or any malware. An effective antivirus software should be installed in your system, and always keep your antivirus updated, as I have already told you. Full system scan should be done periodically. A regular disk defragmentation should be done to remove all unnecessary information so that the system shouldn't slow down. Disk defragmentation done at regular intervals helps the disk space to be used at optimal level. You should take regular backups of your data. In case of data is lost due to any reason, you can easily retrieve your data using the backup file. Simple. The system shouldn't be upgraded with new technology that were not there at the time of purchase. Fine. Also, storage space should also be increased for storage of more information. If you are getting some disk errors, then make sure that temporary internet files should be deleted from time to time. Software should be updated regularly so that it works with maximum efficiency. Now again a new term which is harming our system, that is computer virus. What is it? It's a software program that attaches itself to computer program and alerts their behavior. Means system को harm पहुंचाता है, and definitely it's a software program. It's may और may not be destructive. कई बार वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ हमारे ऊपर एक नज़र रखता है जासूस की तरह. Okay, and whenever that information is misused, so obviously harm will be there, and sometimes directly the virus is harmful. Some viruses erase data or corrupt the programs on the computer. When a virus enters a computer system, it makes copy of itself. Okay, अपने ही replicate करते रहेंगे, अपनी ही copies बनाते रहेंगे, and carries out the harmful task that it is programmed for. Some viruses get activated at a certain date and time. Virus also attach to the file stored on the computer or the storage media and harm these files. A virus may get attached to email message also and spread from one computer to another with the help of mail. Okay, that is mail virus.
A computer virus can infect only the software but not the hardware. अब एक नई चीज हमें पता चली कि वायरस हार्डवेयर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता. That only infect the software. A computer can get infected with virus in any of the following way. Infected files के through, infected pen drives, hard drives के through, infected CD drives के through infected file attachment of emails. Through these all methods the virus can spread. What virus cannot do? अब हम वायरस क्या कर सकता है ये तो सबको पता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता. Means it cannot infect the files on CD और DVD. अगर CD और DVD में कोई वायरस फ्री फाइल्स है ना, तो वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. और वायरस cannot infect the hardware of your computer. Clear? These two things can't be affected by a computer virus. Now some of the common signs of computer virus. क्या क्या symptoms होंगे when a virus attack will be there in your computer? First, computer runs very slow. Change in the file size. Randomly आपकी फाइल छोटी हो जाएंगी, कोई फाइल बड़ी हो जाएगी, तो random changes are there. Computer often stops responding. आपका सिस्टम हैंग होने लग जाएगा, not responding, something like that. There is an increase in the number of files. अपने आप ही फाइल्स की कॉपीज रेप्लिकास बनने लग जाएंगी. Unusual error messages appears on the screen. Computer restarts on its own continuously. These are the symptoms जिनसे हमें पता लगेगा that virus attack is there. Now how to prevent this infection? First of all, install and use antivirus on your software. ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे. देन कीप योर एंटीवायरस अपडेटेड. देन स्कैन ऑल द फाइल्स विच यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. डोंट ओपन द ईमेल्स विच यू रिसीव फ्रॉम एन unknown person or unknown ID. Don't allow any untrustworthy person to use your. Never use unknown pen drives or CD on your system. Never click on the windows that pop up when you are surfing the internet. Means internet पे काम करते हैं कई बार हमें allow, block, something message like that we receive, तो never respond to such messages. Now comes antivirus. What's it? To prevent our computer from being infected with the virus, we should install antivirus. Means किसी भी कोई बीमारी हो जाती है तो उसका एंटीडॉट कोई बनता है ना, तो इन द सेम वे वायरस इफ सपोज टू बी अ डिजीज, तो वायरस को काटने की दवाई है एंटीवायरस. ओके, तो टू प्रिवेंट आवर सिस्टम फ्रॉम द attack of virus, we should install antivirus software and run it periodically and keep it updated so that it can scan and remove the viruses. Antivirus software is a program that is designed. अब क्या काम करता है? Number 1, detect the virus and then remove the malicious program from the computer. पहले ढूंढता है और फिर remove करता है. Some examples like Quick Heal antivirus, McAfee virus, Norton antivirus. So many viruses are there in the market. For an antivirus program to be effective, it needs to run in the background at all the times. Means जितनी देर आपकी मशीन ऑन है, background में antivirus should always keep running. Okay, keep the antivirus software updated so that it can recognize the new viruses. Run full disk scan periodically. Now how to scan and clean virus? Proper तरीका कैसे करें? To use Quick Heal security, total security to scan computer system. अब हम process देख रहे हैं कि तो Quick Heal total security antivirus है उसके थ्रू. Okay, first of all click the start button जो task bar पे हमने देखा. Click on all program, Quick Heal total security, and from Quick Heal total security we can double click. If the icon is there on the desktop, then we can also double click. जरूरत नहीं है start button से जाएं हम. The main window of Quick Heal opens. ठीक है, Quick Heal की main window तो हम सभी open कर लेते हैं ना. This window has 3 sections. The top section is option description settings.
Using this option you can customize settings like any automatic update is there or not, internet settings we can change, self protection we can decrease or increase as per need, password can be set for your quick heal antivirus, or we can restore the default settings. All these changes we can do. In this again a menu you will get, that is tools. This menu helps you to diagnose the system in case of virus attack or clean application or internet activities or restore. All these settings we can do with the help of tools. You can also exclude files from virus protection. Reports menu, it will help you to view the activity reports of the scanner. Means scanner ने कब फाइल स्कैन की, कितनी फाइल स्कैन की, कितनी इन्फेक्शियस मिली, कितनी रिमूव की, मीन्स ईच एंड एवरी डिटेल of your quick heal can be taken through the reports menu. Next is help. This option provides information on how to use the quick heal antivirus. Means a complete help detail option is available in the help. Now the middle section of this main window of quick heal will have the files and folders option. This will help you to protect files and folders against any virus attack. With this option you can configure scan setting, we can configure virus protection, to block any suspicious file, to scan, to decide the scan schedule, to exclude any file from the virus protection. All this can be done. Next is email section. This helps you to configure email protection कि मेल के थ्रू भी वायरस ना आए हमारे पास. Trusted mails client protection and spam protection means पूरे email को protection देंगे through this option. Then internet and network. This option helps you to configure the settings for internet and network protection. With this option you can configure firewall protection, browsing protection, any malware protection as well as phishing protection. Then comes parental control. This helps you to control the internet access कि बच्चों को लिमिट करना, कितना बच्चे देखें इंटरनेट पे, क्या देखें क्या नहीं देखें. All that comes under parental control. External drives and devices. This option allows you to configure settings related to threats that comes from CDs, pen drives, external disks. Now the third section, that is the bottom section, that contains news. This option provides you the latest news regarding the quick heal. Next is PC tuner. This provides you the help to improve the system performance by cleaning your system with features such as disk cleanup, registry cleanup, traces cleanup, duplicate file finder. All these options are available in PC tuner. Next is scan. This option provides various scanning options like full system scan, custom scan, memory scan, mobile scan, boot time scan. जो भी scan आपको उस time suitable है you can do, but it will be available in the bottom section under the scan menu. Okay, for full system scan click on the scan. From there you will get an option of full system scan. The scan process will begin. On completion of scan the scan statistics will be displayed to you. मीन्स इतनी फाइल स्कैन की, उनमें से इतनी सस्पिशियस थी, इतनी रिपेयर हुई, ऑल द रिपोर्ट्स इन स्टैटिस्टिक्स फॉर्म that will be displayed to you. After that click on close. Now how to remove the temporary files of your system. सिस्टम में बहुत सारी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, कैसे रिमूव करते हैं. There are two methods. I'll show you practically also, but let's see. Double click on the computer icon of the desktop. The computer window opens. Okay, and from there right click on the any disk. In the shortcut menu you will get properties option, और property window में there you will get disk cleanup. Okay, in the disk cleanup suppose हम C drive में कर रहे हैं,
ओके, क्लिक द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू टेम्परेरी फाइल्स. जिस भी फाइल के आगे आप टिक करेंगे दैट टाइप ऑफ फाइल्स विल बी डिलीटेड. तो सपोज वी हैव क्लिक्ड इन फ्रंट ऑफ टेम्परेरी फाइल्स, तो टेम्परेरी फाइल्स विल बी डिलीटेड and click on OK. A confirmation message will come to you. Okay, it will ask the yes you want to delete or no. So click on yes, so the files will be deleted. Windows will delete all the temporary files. अब temporary files of temporary folder कैसे? वही files but with another method. For this click Window R button from the keyboard. Run dialog box opens. There you will type %temp%. The temp folder opens. Control A to select the files and press delete button. Now let me show you the practical. Now with the keyboard I am pressing Window R. Okay. Window R I have pressed. This run dialog box open. Here I am typing %temp% and press enter. You can see this all the here temp is written, all the temporary files, 349 items are there. These all are temporary files. With the keyboard I am pressing Ctrl A. All the files are selected. Okay, and with the keyboard I am pressing delete. Okay, so it is started deleting all the files. Clear? This is how we can delete, and wherever any suspicious or any problematic file is there, it will ask you that it is to be deleted or not, so you can skip for that. Clear? This is how we can delete the files. Okay, after deleting, the message box will come. In my computer I have changed the settings that it is not asking me yes or no to delete, but in your system by default it is asking that deleted or not to be deleted. So if you press on yes, the files will be deleted. That's it for now. Thank you. Bye.